Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is adverb of frequency. What is an adverb of frequency? Students, you know that adverb means a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि वर्ब एडवर्ब की मीनिंग है एड वर्ब, यानी विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब or which adds something to the meaning of an adjective or which adds something to the meaning of another adverb. So but here we are only with one type of adverbs, which is adverb of frequency. By frequency we mean how often. Any adverb of frequency answers to the question how often. Any how many times or how often, how frequently one does something. So that is what adverb of frequency tells us. तो आते हैं examples की तरफ. Example से that will be cleared. For example, I always speak English. अब इस सेंटेंस को देखें, I always speak English. यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है always. It shows how often. How often do I speak English? I always I speak English. So that shows the frequency of the action of speaking English. अब इसी सेंटेंस को अगर we have a negative sentence of this type, so then what will be the position of the adverb of frequency? फिर frequency adverb की पोजीशन क्या होगी, इसको किस जगह में इसकी कौन सी प्लेस होगी? So let's take this example. Okay, I do not always speak English. Now look at this sentence. You can see that always is here now. अगर आप देखें तो यहाँ भी speak से पहले always है और यहाँ भी speak से पहले always है. So the best position for a frequency adverb is just before the verb, in front of the verb. The verb it modifies. यानी वो verb जिसके बारे में कुछ extra information ये adverb दे रहा है. So the adverb is used just before that verb. Let's take another example of frequency adverb. She is never late and she is usually playing. If you see, तो हमारे पास इन दोनों sentences में verbs different हैं. यहाँ पर verb है is और यहाँ पर helping verb और playing, यानी ये दोनों वर्ड मिलाकर वर्ब फ्रेज या वर्ब बनता है. लेकिन दिस पार्ट एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्ब, ये दोनों हिस्से इज और प्लेइंग, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ने अलग कर लिया और ये यूजुअली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये प्लेइंग से पहले आया. तो अगर आप यहाँ देखें इन दोनों एग्जाम्पल्स में ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो वर्ब से थोड़ा सा, यानी मतलब जस्ट बिफोर द वर्ब, और यहाँ भी जस्ट बिफोर द वर्ब आया है.
और इस सेंटेंस में यूजुअली, या अगर हम इसको ऑलवेज बी करें तो द सेम विल बी द पोजीशन। तो आप देखिए यहाँ भी जस्ट बिफोर द वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब। अब इज यूजुअली प्लेइंग और इज नेवर लेट, इन सेंटेंसेस में फर्क है। यहां पर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है नेवर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर, और इस लेट को मॉडिफाई करता है। इन सेंटेंसेस में वर्ब स्पीक और प्लेइंग को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे पास बी वर्ब या कोई भी लिंक वर्ब एज अ वर्ब आया हो, एज अ मेन वर्ब आया हो, तो फिर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को उसके बाद लगाते हैं, चाहे कुछ हो, एनीथिंग और नॉट। यूजुअली देयर इज अनदर एडवर्ब इन सच केसेस और अनदर एडजेक्टिव। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी will be here after the main verb is, and in those cases that will be before the main verb speak. अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई डू नॉट, तो आप देख सकते हैं कि ऑलवेज फिर भी वर्ब से पहले आया है। सो द सेम इज द केस हियर, शी इज नेवर लेट। सो डू नॉट और इज दोनों, यहाँ तो इज एज ए मेन वर्ब आया है, लेकिन यहाँ डू नॉट को देखे, डू नॉट और स्पीक के दरमियान ऑलवेज है। यहाँ पर शी इज और प्लेइंग के दरमियान यूजुअली है। तो जब हमारे पास बी वर्ब एज ए मेन वर्ब आता है तो उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम तो यूं भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस कि शी इज़ नेवर लेट, ये सेंटेंस हम यूं भी कह सकते हैं कि शी never is late या she always is late। बिल्कुल ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही है, सिमेंटिकली भी सही है, लेकिन मीनिंग चेंज है। दैट इज द नॉर्मल ऑर्डर, शी इज नेवर लेट, ये नॉर्मल ऑर्डर है। और आम तौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं एज एम आर के साथ, वाज वर्ब के साथ, या एनी टाइप ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बी वर्ब के साथ, तो यही ऑर्डर है कि शी इज़ नेवर लेट। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि शी नेवर इज़ लेट, शी ऑलवेज इज़ लेट, तो यहाँ पर सेंटेंस में एम्फेसिस आता है, स्ट्रेस आता है, और जुमले में बहुत ज़्यादा ताकीद होती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ शी नेवर इज़ लेट। लेकिन रिमेंबर कि दिस इज़ नॉट द नॉर्मल ऑर्डर, ये नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, इट इज़ अनयूजुअल, दिस ऑर्डर इज़ अनयूजुअल। और वो जो ऑर्डर है दैट इज़ नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं, मैं उनको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है। सो इन एनी एडवर्ब विच आंसर्स टू हाउ ऑफन, तो ये हमारे पास है ऑलवेज, नेवर, ever, seldom, sometime, already, usually, and so on। दूसरे भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हमारे पास हैं, और ये बहुत ही जो मशहूर एडवर्ब्स है, ऑफन भी इनके साथ है, दैट इज़ वेरी फेमस, ऑफन, आई मीन दैट इज़ यूज्ड वेरी मच। तो सच एडवर्ब्स आर देयर, इवन के एडवर्ब फ्रेजेस भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हो सकते हैं, जैसे कि सम टाइम वहाँ पर है, मैनी टाइम्स है, सेवरल टाइम्स है,
or so on. So there are so many words like that. Even generally is also an adverb of frequency in some cases, as well as just, ये भी adverb of frequency है. तो नोट कर ले इन एडवर्ब्स को कि always, never, ever, seldom, sometime, often, already, usually, generally, just, etc. ये सब adverb of frequency है which answers to how often or the position of these adverbs is यानी subject of the sentence plus frequency adverb प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, एंड देन द ऑर्डर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस frequency adverb and then rest of the sentence. Or examples already that have been mentioned in this video. So that is what about adverb of frequency. Remember कि adverb of frequency की position change करने से meaning में थोड़ा सा फ़र्क आता है. For example, हम always की मिसाल लेते हैं, I always play cricket. तो if the sentence is I always play cricket or I play cricket always, तो इसमें तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ नेगेटिव सेंटेंस, शी डज नॉट ऑलवेज हेल्प हर सिस्टर. वो हमेशा अपनी बहन की मदद नहीं करती. अब हम इस पोजीशन को चेंज करते हैं कि शी डज नॉट हेल्प हर सिस्टर ऑलवेज. नो चेंज इन द मीनिंग, दैट्स क्वाइट ओके कि हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को बाज सेंटेंसेस में एट द एंड भी लगा सकते हैं. अच्छा, लेकिन इफ वी राइट दिस सेंटेंस लाइक शी always does not हेल्प हर सिस्टर. तो अब इस सेंटेंस की मीनिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा और मीनिंग चेंज हो जाएगी. ग्रामेटिकली भी सेंटेंस सही है, सिमेंटिकली भी सही है, लेकिन नॉर्मल ऑर्डर नहीं है. एज प्रीवियसली वाज सेड कि शी ऑलवेज डज नॉट हेल्प हर सिस्टर. तो यहाँ पर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा इस वर्ड पर, शी ऑलवेज डज नॉट हेल्प हर सिस्टर. तो दैट इज वर्ड कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएं किसी भी टेंस में, तो देन दैट इज द डिफरेंस के सेंटेंस में स्ट्रेस आएगा. अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल शी ऑलवेज, शी समटाइम्स, शी नेवर, शी सेल्डम हेल्प्स हर सिस्टर. तो आप अब यहाँ पर तो ये तो नॉर्मल ऑर्डर है. यहाँ पर अगर हम यूं ये स्ट्रेस वाला पोजीशन लगाते हैं तो यहाँ तो कुछ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डायरेक्ट वर्ब है. तो इसका हल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे और सेंटेंस यूँ हो जाएगी कि शी ऑलवेज डज हेल्प हर सिस्टर. शी ऑलवेज डज हेल्प हर सिस्टर, कि वो हमेशा अपनी बहन की मदद करती है. सो आप इस ऑर्डर को देखें, शी ऑलवेज डज हेल्प हर सिस्टर. तो ये नॉर्मल ऑर्डर से थोड़ा सा हट कर है. द मीनिंग इज अ बिट, थोड़ी सी स्ट्रेस है मीनिंग में. तो फिर यूं हम इस सेंटेंस को एब्सोल्युटली करेक्ट ले सकते हैं कि शी ऑलवेज डज हेल्प हर सिस्टर. तो इस डज की वजह से हमने हेल्प को पहले, ऑलवेज को पहले लगाया और हेल्पिंग वर्ब डज बाद में आया.
تو یہ پازیٹیو سینٹینس پہ جب ہم بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں تو اسی ٹینس کا ہیلپنگ ورب یوز کر کے اور بیفور دیٹ always یا never ever sometimes whatever the adverb is وہ adverb of frequency یوز کر کے سینٹینس میں زیادہ اسٹریس آ جاتا ہے. So I think that's it for today. Inshallah meeting you in the next video.